ज्ञान के लाभार्थ चलाई जाती है और इसमें जो कुछ भी एस्पस प्रयागराज संस्थान के द्वारा रिसर्च वर्क निकल के आता है वो सब कुछ आपको इस बुधवार की क्लासेस के माध्यम से अपडेट मिलता है। आप सभी पहले से लेकर के छठे सेमेस्टर तक के कोर्सेज में एडमिशन लिए होंगे, पढ़े होंगे, कुछ लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो गया होगा। तो आप सभी के लिए जो कुछ भी यूजफुल है वह इस बुधवार की क्लास में पढ़ाया जाता है। अभी लास्ट मंडे को पहले सेमेस्टर से 7वें सेमेस्टर की करस्पॉन्डेंस कोर्सेज के एग्जाम कंप्लीट हुए। आप सभी उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे। अब नए सत्र के लिए जुलाई से दिसंबर 2022 के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गया है। आने वाले फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन कैंपस कोर्स पहले से चौथे सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होने वाली है। उसके बाद कैंपस का भी यह सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर नए सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और फ्रेश बैच यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी एडमिशन अब स्टार्ट है। तो आप सभी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस बीच इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रयागराज संस्थान के द्वारा सफल संचालन पहली बार हुआ और ऐसी ही इंटर्नशिप 7 दिन की इंटर्नशिप वर्कशॉप और इसके साथ 2 दिन का कैप्सूल कोर्स जुलाई महीने में 23 तारीख से 31 तारीख तक होने जा रहा है, जिसमें 23 से 29 तक इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा और 30 और 31 लास्ट में 2 डेज वर्कशॉप होगा जो संस्थान के द्वारा नया रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर आधारित होगा। तो आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करें और जो इंटर्नशिप है वो पूरी तरह ऑफलाइन होगी और वर्कशॉप जो 2 दिन की है वह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी। तो आज की क्लास प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश सेठान साहब लेने वाले हैं और जो भी इससे संबंधित केस हिस्ट्री बेस्ड रिसर्च वर्क है वो आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर लेने वाले हैं। हम आदरणीय अग्रवाल सर को आमंत्रित करें। इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर जहां से प्रार्थना आयोजित होगी और ओमकार होगा। आप सभी इसमें शामिल हैं। पीयूष जी प्रार्थना लगा दीजिएगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी बलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो
पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और रीता जी प्रार्थना के लिए। ये आज की आईडी कुछ 100 की सेट हो गई है, तो पीयूष जी इसकी हो सके तो लिमिट बढ़ा दीजिए 1000 की। अग्रवाल सर शीघ्र ही कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक आप लोग वेट करिएगा। पीयूष जी अग्रवाल सर को होस्ट बना दीजिएगा। तो अग्रवाल सर जुड़ चुके हैं और अभी हम आमंत्रित करते हैं आज की क्लास के लिए आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को। डॉक्टर खेतान साहब ऑन दी वे हैं, जब तक नहीं आते हैं। Am I audible and visible also? Hello. You are audible, sir, and visible also. Hello. 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 जी आवाज आ रही है। आज काफी समय के पश्चात, हेलो जी आवाज आ रही है। काफी समय के पश्चात ये बुधवार की क्लास प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए विशेष रूप से डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब का निरंतर
आग्रह, अनुरोध और उत्प्रेरण और प्रेरणा रही है। इसके लिए हम विशेष रूप से आभारी हैं और निरंतर हमें इस बात का लोगों से अनुरोध और आग्रह प्राप्त हो रहा था कि यथाशीघ्र इसे प्रारंभ किया जाए। मित्रों, प्रारंभ करने से पूर्व मैं उस परम शक्ति का को नमन करता हूं जिसके कारण हम सब मिलकर इस एक्सप्रेस के नेशनल चैनल में एक बार फिर से बुधवार की इंटरेक्शन क्लास के लिए हम लोग आपस में मिलकर कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो सर्वहिताय हो, जनहिताय हो। मित्रों, मैं सबसे पहले प्रोफेसर अनिल सिंह जी और प्रार्थना के लिए अंशु जी और रीता जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का इस एक्सप्रेस के नेशनल चैनल में अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि आप एक छोटी सी सूचना में सभी मिलकर संवेद रूप से इंटरेक्शन के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से इस लंबी अवधि के गैप में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो कि और महत्वपूर्ण रिसर्च की तरफ हमारा ध्यान गया है और हमारी रिसर्च विंग ने इस अवधि में बहुत सी ऐसी चीजें प्रस्तुत की हैं जिनके कारण हर घर में कोई ना कोई ऐसी परेशानी रही जिसका इलाज निश्चित रूप से एस्टेब्लिश पैथीज में नहीं उपलब्ध हो सका। हम लोग जब तक प्रकाश केतान साहब अभी रास्ते में हैं, शीघ्र ही कुछ ही चंद ही मिनटों में वो हमारे आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं एक और ऐसी शक्ति जो कि हमारे आपके पीछे और इस एक्सप्रेस परिवार के पीछे है, हमारे अजस्र प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी का स्मरण करते हुए आपके साथ उनको सब मिलकर हम नमन करते हैं। मैं आप इस अवधि में कुछ चीजें ऐसी शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत अरसे से ये एक हमारी चाहत थी कि कम से कम बिंदुओं में अधिक से अधिक उपचार और लाभांश दिख सके। डॉक्टर खेतान सर आ चुके हैं। मैं उनके बहुमूल्य समय और उनके योगदान को, जैसा कि मैंने बताया कि आज बहुत अरसे बाद बुद्ध की क्लास, उनके निरंतर समयाभाव और के बाद भी उन्होंने सदैव हमें प्रेरित किया है। इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर प्रकाश केतान, आपको नमस्कार। Thank you, sir, giving me another opportunity to restart our Wednesday lecture. We would like to re-emphasize and introduce a spinal cord. It is contained in the epidural space. There is a dura mater, pia mater, and a required matter. The space above the dura is epidural space, in which it is contained network of sensory and motor nerve. It is formed cord-like structure
extend from foramen of magnum to L1, lumbar 1 vertebra, terminates at conus medullaris, and chorda equina begins at below L1 level. Either lower border of L1 or upper border of L2 is the level at which a spinal cord terminates. And from here, conus medullaris end and chorda equina, like a tail of a horse, starts from it, and the final terminal is a band-like structure which extends from conus medullaris to the coccyx. It is a very phylum terminal, is a very useful structure. We used to identify it, and we have to differentiate the phylum terminal between the nervous tissue when we have to operate it, and there are certain 3 and 4 criteria by which we can easily differentiate between glial tissue and non-glial tissue. Phylum terminal is a non-glial tissue, it is a band-like tissue. It is easily differentiated. A spinal cord is divided into 4 different regions: cervical, thoracic, lumbar, and sacral region. The different cord regions can be visually distinguished from one another. Two enlargement of the spinal cord can be visualized. Just see in the picture. The cervical enlargement, which extends from C3 to T2, and the lumbar enlargement, which extend between L1 to S3. Next slide. So there are 2 enlargement of the spinal cord. Just see in the picture. The surface of a spinal cord shows several longitudinal grooves: deep anterior fissure, shallow posterior median sulcus, and laterally there are 2 sulci, anterolateral and posterolateral. From the lateral sulci, a series of rootlets emerge anteriorly and posteriorly on each other. Several filaments from anterior lateral and posterior lateral sulci unite and form ventral and dorsal root respectively. As you know, we have taught it many times in our lectures. The dorsal and ventral roots are paired root, joined distal to the dorsal root ganglion and form a spinal nerve, and which exist the canal through the intervertebral foramen. Now see the structure. As I told you, there are 31 segments of the pairs of the spinal cord. The cord, there is 31 segments defined by 31 pairs of the spinal cord. There is a mismatch of 2 vertebrae. There are 33 pairs of the vertebra while 31 pairs of the spinal nerves. So there is a mismatch of 2 vertebrae, 8 cervical nerves, 12 thoracic nerves, 5 lumbar nerves, 5 sacral nerve, and 1 coccygeal nerve. Dorsal and ventral root enter and leave the vertebral column respectively through the intervertebral foramen at vertebral segment corresponding to the spinal segment. During the initial 3rd month of embryonic development, the spinal cord extends the entire length of the vertebral column. Both grow at the same rate. The development continues. The body and vertebral column continue to grow at much greater rate, as I have told you, than the spinal cord proper. This results in displacement of lower part of spinal cord with the relation to the vertebral. Outcome of this uneven growth in adult spinal cord extend to the level of 1st or 2nd number vertebra, and nerve grow to exist through the same vertebral phenomena as they did during the embryonic development. In embryonic development or till the age of 1 year, cord extend till S1 or S2 vertebra. But after birth, it ascends upward, and then conus medullaris terminates at the level of lower border of L1 or upper border of L2. The growth of the nerve root occurring within the vertebral canal result in lumbar, sacral, coccygeal root extending to their appropriate vertebral level. All spinal nerves except first exist below the corresponding vertebrae
In the cervical segment, there are 7 cervical vertebrae and 8 cervical. This you have to remember carefully. They are the vertebrae 7 and nerves are 8. C1 to C7 nerve exists above their vertebral, where C8 exists below C7. It is a mathematical calculation of to calculate the level of dermatome. If you have a knowledge of 31 pairs of spinal nerve and 33 pairs of vertebrae. Next slide. Therefore, the root filament of the spinal cord segment have to travel longer distance to reach the corresponding intervertebral foramen from which the spinal emerge. The lumbosacral roots are known as cauda equina, a bunch-like structure. This is the level, but I would like to tell you how you can calculate it. Just see. Since it terminates at L1, there is definitely a mismatch between a spinal cord and vertebra. Next. What is the function of a spine? As you know, the most important function that it is protection of the spinal cord and nerve root, internal organ also. Other is it provides flexibility of the motion, 6 degrees of freedom. Just see, we can do flexion, extension, lateral bending. And in many yoga exercises you have seen, we are doing left-right rotation also, rotational exercise. What is the benefit of our normal yoga exercises, normal asana, or normal physical activities? We are hardly doing any rotational movement in our routine activities. We are either doing flexion or extension. We are not even doing our side movement also. In a package of 45 minutes, 1 hour, half an hour exercises, we used to perform all the movements possible at different level of spine. Like there is a different movement at C1, C2, different movement at C6, C7, different movement D12, L1. To just mind it in our routine activities. If a person, highly qualified person, is doing job in a bank, in spite of very active lifestyle, he is only doing flexion and little bit extension while sitting on the chair. He is rarely performing lateral rotation or lateral bending or any other rotational exercise of the spine. So the final outcome of this, we get fixation or we get osteophytes at these levels. Since we are not mobilizing our natural joint, therefore it get fixed, it get stiff, it get calcified. And in terms of calcification, we call osteophyte. There is a growth of bony osteoclast cells. There are 2 types of the cell, osteoblast and osteoclast cell. Growth of these cells and formation of osteoclast, or there is a fusion of vertebra. Many times you see, many times the intervertebral foramen through which the spinal nerve exits, it get narrowed. This is also a harm of not doing active lifestyle. Therefore, we are giving much stress on the slide number 14. Just see what is the lordosis. It is a normal curvature of the spinal cord. It is not, a spinal cord is not a straight oxygen. You just see. It is a structure
which has certain degree of convexity, concavity at different level. We called it lordosis, kyphosis. Just see it. In many X-ray finding, you will appreciate they used to write the loss of normal lordosis. Means there is a straightening of the spinal cord. And since we know our weight, it is a weight-bearing joint. The gravitational force passes through the spine, and it has to pass through a different level, through different curvature. Once we get a loss of lordosis, definitely without any disc, without any erosion of the bone, without any muscle spasm, you get extreme pain only due to loss of lordosis. Whenever there is loss of lordosis, there is a muscle spasm. So you have to think about it. You have just remember, you have to just visualize the picture of the whole spinal cord, how it looks like in the cervical, dorsal, in the lumbar, in the sacral region, and in the coccygeal. Again, we want to simplify our teaching. Just see the level of the cervical, thoracic, lumbar, sacral, and coccygeal. This is the whole life picture, and it is the line of gravity. Just see. Next slide, please. Now we have to think about the internal structure of the spinal cord. When we do a transverse section of the adult spinal cord, white matter in periphery, gray matter inside, and a tiny central canal filled with the CSF at its center. Surrounding the canal is single layer of cells, ependymal layer. Surrounding the ependymal layer is gray matter. A region contains cell bodies, which is S-shaped or butterfly shaped. Two wings of butterfly are connected across midline by dorsal gray commissure and below the white commissure. It is a S-shaped structure. Just see the beautiful diagram. The butterfly, just see the butterfly. What is the gray matter? Just see everything in front of you. Where is the gray matter? Where is the anterior commissure? Where is the posterior commissure? Just see. Just see, this is the white matter, this is the gray matter, this is here we can appreciate here. Central canal, anterior commissure, posterior commissure, everything. And the shape of the spinal cord get changed as the level changed. This is the various nerves, various column, basically sensory column and motor column. Some tracts are found in the white matter also. Some tracts are found in the gray matter also. Just see it. The tracts, knowledge of tract is very essential to delineate any disease, to find out any particular level of the disease. White matter which consists of longitudinal bundle of nerve fiber divided into 3 columns on each side. Anterior column, lateral column, and posterior column. As I have shown you in the previous picture of a spinal cord, anterior column contain ascending and cross fiber of ventrospinal thalamic tract along with the descending fiber of the olivospinal, vestibulospinal, tectospinal, and ventrocortical spinal tracts.
Lateral column contain the major descending motor pathway, lateral corticospinal tract with the smaller descending retrospinal tract, descending and crossed spinothalamic tract. In the lateral corticospinal tract, the descending motor neuron designated for the cervical segments, the posterior column fiber from the lower limb lie more medial than the ascending from the upper limb. You have to think it. You have to exercise on this last line. In posterior column, fiber from lower limb lie more medial than ascending from the upper limb. Therefore, there is an upside down presentation in the brain, and you in acupressure you are giving much more important than this is the thumb, and one of the largest area of the brain supplying the thumb. Now just see where is the tract and where is the posterior gray commissure, anterior gray commissure, where is the central canal, and we have also shown you some lateral white column. We have shown you anterior white column. Everything we have shown you this diagram. The beautiful transverse section of the spinal cord, which is showing in the middle central canal. In the middle, there is a anterior horn cell, posterior horn cells, and the white matter of the spinal cord. The another live picture of a spinal cord, just see it, how advanced we are in the field of imaging. You have heard, you have seen many diagrams from Gray's anatomy. But at that time, then MRI, CT scan, and other mode of diagnostic modalities were not there. Therefore, we take the picture of the cadaveric picture. We used to cut the spinal cord and take picture, and then we try to talk you through that picture. Now these are the live pictures. These are not cadaveric picture. These picture we cannot made by our pen, or it is not a diagrammatic picture. Now we are able to depict the whole spinal cord, the whole tissue, even just see the central canal with the advanced images. Just see the significance of our advanced images. For your better understanding, we are showing you how the anterior nerve, how the ventral roots, dorsal root came out, and how the spinal nerves, just see it. This is the spinal nerve, this is the rootlet, how it is formed, and then a spinal nerve pass out through the intervertebral foramen. This is the spinal cord, just in which we have shown everything that we have taught you till now, like anterior commissure, posterior commissure, their sulci, two lateral sulci, one anterior sulci, one posterior sulci, the butterfly separate. And we are also showing you the three covering of the spinal cord. Just see. We have started our lecture that spinal cord contained an epidural space. Just see the outer covering, the most outer covering. It is the dura mater, then arachnoid mater, the pia mater, and spinal cord lies in the epidural space. This is the diagram of the spinal cord. This is the sensory nerve, and this is the motor nerve root. And you see we called it meninges.
Arrangement of fibers. Posterior column, as they don't cross at the entry point in the spinal cord segment, the fiber from lower limbs are placed more medially than near the central canal. The fiber from upper limbs are placed laterally, medial to lateral cervical level. There we call it syringomyelia. What is syringomyelia? The dilatation of the central canal. So therefore, in central canal, there is a different, whenever there was a, we used to call a syphilis. Nowadays, syphilis is not common in our country. But when it was common, one of the most common finding was the dilatation of the central canal or syringomyelia. If you know how the fibers are arranged near the central canal, once there is a dilatation of central canal, you can easily appreciate which fiber will be damaged earlier and which will be damaged later. Therefore, this is the significance of slide number 26. Medial to lateral cervical level, देखिए, what is the arrangement of the cervical cord? Central canal to dorsum, this is the anterior to posterior, touch, position, movement, vibration, and pressure. Sometimes you get the touch receptor intact, you get pressure receptor 2-point discrimination intact, the pressure receptor intact. Sometimes 2-point discrimination, that is a main characteristic feature of the parietal lobe. The vibration movement or pressure movement or position sensation. In some cases, we cannot get touch sensation, but pressure, vibration, sensation intact. It means the damage is not complete. It is a partial spinal cord damage. Next slide. Lateral column and anterior column. Just see corticospinal tract, spinothalamic tract. As the fiber cross in the spinal cord, the lower limb fiber are placed more laterally, upper limb fiber are placed more medially in the cervical cord. The different arrangement of lateral and anterior column and posterior column that you have to appreciate. Corticospinal tract. Some fiber decussate, some goes straight, so that you have to appreciate. There is a certain level of decussation in the spinal cord. As the fiber cross the spinal cord or decussate, the lower limb fiber are placed more laterally and upper limb fiber are placed more medially at the cervical. Just see this diagram. We have shown you some tracts in the white matter. Some are descending tract and some is ascending tract. Dorsal column, lactospinothalamic tract carry pain and temperature sensation. Ascending tract carry sensation, while descending tract carry motor function. Dorsal column for deep touch, vibration and proprioception. Lateral spinothalamic tract, pain and temperature. Ventral spinothalamic tract for light touch. Next slide. There are certain nuclei of the spinal cord. Like when we have read about cerebellum, there are 10 cerebellum or vermis. In the same way, there are certain nuclei like substantia gelatinosa, nucleus propriosus, dorsal nucleus of Clark, intermedial nucleus, lower motor neuron nucleus. Just see another beautiful diagram in which you can appreciate the different type of the nucleus and central canal and the laminae.
The distribution of cells and fiber within gray matter of a spinal cord exhibits a pattern of lamination. The cellular pattern of each lamina is composed of various size shapes of neuron. Laminae 1 to 4 are connected with the esteroception sensation. 5 to 7 are concerned with primarily with the proprioceptive sensation. And lamina 7 acts as a relay between muscle sphincter, midbrain, and cerebellum. Laminae 8 to 9 are axons of these neurons, innervate mainly skeletal muscle. Lamina 10 surrounds the central canal and contains nuclei. Within the spinal cord surrounded by a epidural space filled with fatty tissue, veins, arteries. Fatty tissue acts as a shock absorber. Next slide. Now just see what we have taught you. This is the final picture. The vertebral body, different part of the vertebral body, the spinal lobe, how the spinal lobe form, how the transverse section of the spinal cord seen in the vertebrae, and how they are covered here. Just see it a different way. This is the more closure diagram, or just see it. The diagrammatic representation of any teaching is very useful. Where is the posterior? Where is the anterior? Where is the lateral? We have everything in front of you. This is the you can appreciate in your body. Whenever you touch your spine, the portion you touch the spine, this is the spine. Whenever you just touch your spine, there is a knuckle-like structure on the back side of body. This is the spinous process. Just see, then the adipose tissue for the shock absorbing capacity, or to prevent any minor major trauma. This is the most delicate structure in the center. Just see, this is the spinal cord. This is S-shaped structure. This is some spinal nerves. Let's see the spinal nerves. This is the ganglion, automatic sympathetic ganglion. Again, this is the covering of the spinal cord. The CSF inside it. Again, this is the vertebral body. This is anterior to posterior. Anterior का मतलब your abdominal side. Posterior मतलब your back side. And see the 3 layers of the spinal cord. How beautiful the layers. How they are supplied the spinal cord. This is the artery. This is the vein. And how beautifully the nerves came out from anterior, from posterior, and they unite to form the spinal nerves. How beautiful we have shown you dura mater, arachnoid matter, the pia matter, and the various spinal nerves. We have started our study today with the 31 spinal nerves. We are showing you the 3 nerves, 1, 2, 3, in 31 spinal nerves. This is a type of spinal nerve. How it is formed? Just see the some rootlets from anterior aspect, the some rootlets from posterior aspect. Just see it, anterior horn cell, posterior horn cell. Then it used to form a spinal nerve here. Then dorsal root ganglion is here. Then just see the artery and vein. This is the pia mater. This is the arachnoid matter, and this is the tube.
This is the blood supply of the spinal cord, anterior spinal artery, posterior spinal artery, segmental artery, and fetor or artery of Adam Quich. There are two posterior spinal arteries, each derived from the corresponding vertebral or posterior anterior cerebral artery of pica. The two vessels traverse the length of the spinal cord, lying just in front or just behind the dorsal nerve roots. There is a single anterior spinal artery formed by the union of the branch of each vertebral artery, which descend through the length of the spinal cord in the anterior median fissure. The anterior arterial blood to the spinal cord in the upper cervical region, each derived from two branches of the vertebral artery, the anterior spinal artery and posterior spinal. These travel in subarachnoid space, send branches into the spinal cord. The spinal arteries are reinforced at each intervertebral foramen by segment artery derived from the vertebral cross costo-cervical junction, intercostal or lumbar. Just see the different picture of the arteries. At a spinal cord region below upper cervical level and anterior and posterior spinal artery narrow and form autonomic network with the reticular arteries. The posterior spinal artery are paired and form an anastomotic chain over the posterior aspect of the spinal cord. Just we have everything shown you in our picture. You just have to make your vision clear with reading the text. See how it's applied. Artery of Adam Quich, also Arteria reticularis magna, is the largest anterior segmental medullary artery. Naturally, who has invented it, typically arises from the left posterior intercostal artery, which branches from the aorta at the level of T9 to L2, supplies the enlargement known as great reticular artery, major anterior segmental medullary artery of. This is the applied anatomy. Anterior spinal artery syndrome. You just see the part which damage, and if you have a knowledge of tracts, then it is very easy to find out what the function will lose. Just loss of motor function with presentation of position, vibration and touch preserve anterior spine. Posterior spinal cord syndrome, similarly like it is a rare condition and clinical projection में loss of proprioception, vibrations, and then loss of two-point discrimination and loss of light touch. Venous drainage, similarly the venous drainage by the formation of some plexus unite to form, and venous drainage just see the picture of the venous drainage. Partial plexus, this is the azygous system, it is the unpaired system. The large network of veins draining blood from the intestine and other abdominal organ back to the heart. The segmental vein drain into the azygous vein located on the right side of the abdomen or into the hemiazygous vein located on the left side. Azygous system also communicates the valveless network called Bartson plexus. Just see the Bartson. Just see here. See the Bartson plexus. Because of azygous system, patient positioning is very important. Posterior lumbar spinal artery, the patient's abdomen should always be free without abdominal pressure. An increase in the pressure will diminish the flow through the azygous system and vena cava. This results in an increased venous flow into Bartson's plexus with a corresponding increase. These are the ascending tracts that I have shown you. Just see the ascending tracts
and just see the descending tracts. Bundle of nerve fiber links a spinal cord or higher center of the spinal cord. There are certain level of neurons, first order, second order, and third order. First order neuron, cell body in the posterior root ganglion. Peripheral process connect with the sensory receptor ending. Central process into the spinal cord through the posterior root. Synapse with the second order neuron in the spinal gray matter. Just see. First order. This is the first order neuron. Second order neuron, cell body in the posterior gray column of the spinal cord. A zone crosses the midline, ascent and synapse with the third order neuron in the ventro-posterior lateral nucleus of the. Let's see, second order neuron. And the third order neuron, definitely it is in ascending tract, cell body in the thalamus. Yes, third order neuron. These are the ascending tracts of the spine. Main somatosensory tract. There are mainly we have to observe 5 things: pain, temperature, touch, light touch, deep touch, discrimination of touch, vibration, sensation. These are the 5 things. And according to the receptors, then the pathway come and the final destination. Post-central gyrus. Precentral gyrus of motor cortex. Post-central gyrus in the posterior frontal lobe of the brain is sensory cortex. This is the final destination. Just see. Pain and temperature, final destination. Light and touch pressure, final destination. Discrimination of touch and vibration, final destination. Now the different enterospinal thalamic tract, pain and thermal sensation carried by the enterospinal thalamic tract. Lateral spinothalamic tract, just see lateral spinothalamic tract, pain and thermal impulse carried out by the lateral spinothalamic tract. Just see the picture, you can easily understand it, how it comes from. Yes, the third order neuron, then it carry, then this. Lateral spinothalamic tract, selective destruction, then pain and thermal sensation on the contralateral opposite side below the level of lesion. Patient will not respond to pinprick, recognize hot and cold. Nowadays, it is clinical practice is completely abolished in the era of modern diagnosis. We used to perform all the tests in a single patient, and we used to take more than half an hour to examine the patient with all the instruments. Nowadays, we have this instrument on our table, but we rarely use it. Anterospinothalamic tract, light touch and pressure carries. Let's see. Fasciculus gracilis and cuneatus. This is in posterior commissure, touch, vibration, sensation, and muscle joint sensation. This is the fasciculus, cuneatus, and gracilis, and you can, according to, on the same side, the posterior column tract, this is the same side, not because no crossing of the fiber, therefore it is the same side. Posterior and internal spinocerebellar tract. The tract arises from the spinal cord and in the cerebellum. Unconscious proprioception information in the cerebellum. Spino-reticular tracts. These are responsible for autonomic responses. Reticular tracts are responsible for autonomic responses to the pain, touch, such type of sensation. Now we can pyramid tracts, descending tracts means motor tracts. There are 80%, more than 80-90% tracts are
cross tract, then anterior corticospinal tract, corticobulbar tract is there. The clinical significance, just see. Clinical significance, from where it arises, where is the lesion, where is the lesion in the midbrain, then pons, medulla, what is the level of the lesion. According to the level of lesion, we decide the lesion. We decide the diagnosis. Mainly in midbrain, in pons, 5th, 6th cranial nerve, along with if it is in medulla, then loss of contralateral power with involvement of lower cranial nerve 9th, 10th, 11th, 12th, means the lesion in the medulla oblongata. This is the vestibulospinal tract, reticulospinal tract. Reticulospinal tract, just see the picture of the reticulospinal tract. Some rubrospinal tract. The lower motor neuron, just see. First order neuron. There are different cord syndrome like anterior, posterior, brown sequence syndrome, single cord syndrome, complete transaction of cord. In many cases, traumatic cases, to see the complete transaction of cord. These are the applied anatomy of all the syndrome. Just as I told you, in syringomyelia, progressive cavitation around and near the central. If you have knowledge of fiber, then you can easily appreciate it. This is the syringomyelia. This is the anterior cord syndrome. We have covered it along with anterior spinal artery syndrome. This is the posterior cord syndrome. Just see. This is the brown sequence syndrome. Hemisection of the spinal. Let's see the hemisection of the spine. Some type upper motor neuron type of the lesion, lower motor neuron type of the lesion. There's certain criteria to diagnose upper and motor type of the lesion. Onus syndrome. This is the chordaequinus syndrome. It was a huge lecture in which we have to cover all the spinal nerves along with the spinal cord, along with anterior and anterior spinal corticospinal tract, lateral corticospinal tract, posterior commissure tracts. Now this is the end of our lecture. Now, if you have any questions, just ask. Thanks. If you have any question session, any doubt, you can ask. This is just re-beginning of our Wednesday classes. Yes, thank you, sir, for wonderful lecture. और आपकी क्वेरी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डॉक्टर प्रकाश किसान साहब से हो तो आप हैंड रेज करें और आपको अनम्यूट कर देंगे तो आप पूछ सकते हैं। अजीत कुमार जी अनम्यूट करिएगा। हाँ नमस्ते सर जी। हाँ सर हम लोग एक क्लास पूरा हम नहीं ले पाए, कहाँ से कि बीच बीच में ना एक ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद कनेक्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? शुरू से जब से ज्वाइनिंग किया तभी से प्रॉब्लम। हाँ इसको मैं रिपीट कर दूंगा, फिर से कर दूंगा, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। इसके सर ये बुक जो आप दिखा रहे थे, ये बुक ग्रुप में डाला जाएगा? हाँ ग्रुप में डाल देते हैं, सर से बात कर ली। हम लोग सारी स्लाइड डाल देते हैं। ओके।
ठीक है, और मिस्टर कृष्णमूर्ति जी। Sir, namaste. This is Krishnamurthy from Bangalore. I'm a 7th sem student. I have an observation and I have a couple of questions which I wanted to ask and see if the observation is right. So if we saw that in the spinal cord, when we slice it, okay, there is a butterfly structure in the middle, and the same, say, if the brain is sliced from the back side, okay, towards the cerebellum area, there also we see a kind of a butterfly structure. Is it does it kind of correlate? Because in terms of TCM, we see that yin yang is opposite, we say in acupressure language, because when we see this gray matter is inside in the spinal cord, whereas the gray matter is outside in the brain, which is which suggests what we are in terms of traditional Chinese medicine, the theory of opposite is making sense. So I wanted to see what does it this butterfly structure of brain and butterfly structure of spine, in terms of my observation, does it make sense or it is not existing? No, no, no. It is not existing. It is a wrong perception of you. Mhm. Butterfly structure we found. True butterfly separate structure. First, you have a wrong perception like it is opposite in the brain. No, gray matter is always in the middle part of the brain. In the middle part of the spinal cord, there is CSF. Adjacent to CSF, there is gray matter. And from adjacent to gray matter on the outer side, always white matter. A spinal cord is a continuation of brain. It is not a continuation of other thing. How can it get reversed? It cannot be reversed. Okay. It can never be reversed. Okay, because in terms of whatever I have studied, it says in brain the gray matter is outside and in spine it is inside. Never. It can never possible. Just read it carefully, read it with the authentic book, and just apply your own brain. A spinal cord is a continuation of brain tissue. Okay. If something is continuation of brain tissue, how it is possible that it get reversed in the lower part of the lower part of the body? No, even I had the same question, sir. How is it becoming reverse? So, but I have what is in your mind, since you have not read in depth. There are some nuclei in the brain which have a shape of butterfly shaped. There is nothing particular butterfly shaped structure in the medulla oblongata. If you get a cross section, and even in the spinal cord, if you are getting butterfly shaped too, it is found in the lower part of the spinal cord or upper part of the spinal cord. The shape changes at every level. Okay. Okay, sir. My second question is, what I have studied is the white matter. What we say, the white matter color comes because of the fat coating which is there. The white fat coating. That is why white color comes. That is what I have studied. But my question is, the cells, are they so big that the entire say either the brain cell or the nerve cells, the neurons, are they large in size compared to other cells in the body? Because it is covering a wide area of the the physical structure of either the brain or spinal cord. Or in a simple word, I can translate: how big are the cells, sir? The neuron cells. Neuron cells, if you go to the basic anatomy of the neuron cells, the structure of the white cell is totally different from the gray matter. You must listen about the neuroglial cells. You must listen about the oligodendrocyte, Schwann cells. There are 3 or 4 types of the cells in the brain by which our brain is formed. White matter is just a supporting tissue of the gray matter. Okay. Okay, and they all the structure, you cannot visualize any cell without any electron microscope. It is very difficult to differentiate, and you have another misreading or misconception that the color of the white matter is due to protein and
No, it is not like that. There are certain deep nuclei in the gray matter, the certain neuroglial cells in the gray matter, by which it appears. There is no coloring agent for white or gray matter. Because when I googled for why No, white matter is white, don't read with the Google. Definitely. it says it is because of the fat. No. Google, don't read. Mhm. Always read with a textbook and very authentic text. So can you suggest some textbooks, sir? Gray's Anatomy, Uh-huh. BD Chaurasi Anatomy, you can read. Okay. Lots of, in South, there is Visram Singh Anatomy. Mhm. Nowadays, it is very popular. Okay. And it is hardly 30 to 40 pages we have in our chapter of Central Spinal Cord. Just go and read. Okay. Thank you, sir. Next question. Sir, Thank you. Ketan sir. Yes, sir. Hello. हाँ, sir. Hello. जी आवाज आ रही है सर आप Dr. Sir, on behalf of all the students and the AQ fraternity, what we have seen that from the from meninges, just attached to the meninges, the cortical brain, which is composed of the gray matter. Is it okay, sir? Sir, it is to be clarified on behalf of all the students, because meninges are the outermost part of any glial tissue. Outermost. Yeah, right. Meninges, the most outermost tissue is dura matter, then arachnoid matter, then pia matter. Just pia below matter is just below the attached to these. It is invisible. Pia matter is inseparable, and it is merged with the glial tissue. Sir, in spite of that, we have three layers of meninges. Sir, my question is on behalf of all the students of AQ fraternity, that just below the these meninges, there is a cortical brain composed of the gray matter. Yes. Is it okay, sir? Definitely okay. It means that that is the outward structure of the whole of the brain. Covering. And as we go deep inside in the brain, we find the different structures of the white matter. Is it okay? Yeah. But while going down from this junction of this, though it is the extension of this spinal cord, but because the tracts are white matter, it is for the transmission. That's why it is outer part, and deep inside is the gray matter inside the spinal cord. Is it not so? It's right. You are right. Then, sir, what Mr. Lakshmana was saying, though it may be the wrong nomenclature, but as if the position wise in the brain, it is the outermost part of the brain, just below the meninges. That is the gray matter. No, it is white and matter. That is meant for the generation of the impulse. No, sir, and no. As we descend into, go deep inside the human brain, the entire structure is that of white matter. No, sir. Why there is a discussion on the things which is not existing? I think it should be closed. When I have shown you the spinal cord structure, when I have taught you brain many times, I have I have shown you the cord of the spinal cord in my lecture. This is not the question. Actually, we are the layman, and out of this wonderful knowledge, we try to know just to apply this anatomy is to be used in the for the purpose of the treatment. So just you have given that the two tracts, one ascending, that is the corticothalamic region that goes up to, that is the sensory, and down from the brain, that is the motor, that goes deep down to the limbs, and all the, whether the painful conditions or the neurogenic pain in the joints, that is material to ask this question. Because we have to clarify all these things, because we do not know, and we have to correlate the things
from this anatomy, we have the Bidi-Chorese anatomy, Gray anatomy. I'm just saying, all sir. the books are there. Just see me. Just see. I am touching my hand with your spoon. Just have touch it. I am touching deep and deep. I am getting pain right now. This pain is carried by a spinothalamic tract. It is a ascending tract. Ascending means ये हमारे impulse को ऊपर पहुंचा रही है by first order neuron हमारे spinal cord तक गई, second order neuron anterior spinal cord में डिस्प्ले किया, देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ ये हमारे पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस पे जाके समाप्त। तो हमें वहां पे पेन मिला। अभी तक मैं अपने पेन की स्टिमुलाई में अपने हाथ को हटा नहीं रहा क्योंकि पेन इतना ज्यादा है। तो कोई रिफ्लेक्स मूवमेंट नहीं, दिस इज द रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो वॉट एवर द थिंग असेंडिंग is on the outer part of the brain and spinal cord. Whatever is the descending, like motor, it is a sensory part. Whatever naturally सेंसरी का मतलब टच, जब हम ऊपर जाएगा ब्रेन को पहुंचाएगा, ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होगा तभी तो नीचे आएगा। और डिसेंडिंग पार्ट का मतलब मोटर, जो ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। इन द सिमिलर वे आवर टीचिंग, आवर ब्रेन इज डिजाइन। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एनी अनदर क्वेश्चन इफ यू हैव? Anil ji, any question? Any? Are you getting my voice? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। Sir, there are many questions because in acupressure, this spinal nerves and spinal cord is more important than anything because all the anterior organs, they are fed by that power supply or the impulse from the spinal cord. There should be connectivity, and we should know what type of the disease process, say cardiac problems, that is the connectivity from D4, D5, D6 and all that, and for lungs and asthmatic patients, the connectivity of the D1, D2. So what we have seen in the practical wisdom, that where the asthma patient as from this TCM and this acutherapy, the asthma is not one type that is that's origin in lungs, but it is the cardiac asthma. It may be due to the blood disorder asthma. It may be due to indigestion, liver and gallbladder may be the culprit, and behind that, even if there is a kidney failure, there is a breathlessness. We call it due to hydronephrotic syndromes causing this breathlessness. So we our request is to know more about the things which are connected with the disease process. All these innervations, no doubt, the lordosis, if this straightening in the cervical region or in the lumbosacral region, and what about this dorsal region, which is responsible for the myelopathy? Because we have to go for the treatment for the neuropathy, myelopathy, and all that connectivity, even the sensory perceptions and sense organ treatment through this cervical tract and or connectivity to the brain. And we cannot, because our system is being holistic in nature, so we have to connect this posterior, this lateral, posterior, anterior, lateral, all these innervations have the specific meaning and very useful for all the organs treatment. I think actually we, on behalf of all these friends, because this purpose of this type of the classes
to know more and more expertise For this, from we you, sir. can share our slides, our lecture on YouTube or on WhatsApp group. I have my personal request to everyone to go through the slides, to go through the pictures, diagram. They try to make the diagram. It is a topic, it is a lecture, a spinal cord along with tracts, along with receptors. We have to take around 15 to 20 lecture to cover it. It has applied anatomy. If you take the entire spinal artery syndrome, just it will take 1 day. It will take one and a half hour. And in a lecture of 1 hour, in which there are 123 slides, we can just give you a preliminary view of everything. Now it is up to you. It is up to your curiosity. How much curiosity in you have? Just go through the slides. Just go through your text. In spite of that, if you have any problem in the understanding, any problem in getting through with the lecture or slides, we are always with you to take 15 to 20 lecture, even separately, even on twice a week. But definitely, certainly there should be a group of some students like you and like Krishnamurti and everyone who is listening. We are just sharing our lecture today. You just go through it and don't use Google. Just go through the important text. And definitely it is the most important part of any system. It is connecting system. It is connecting your touch receptor with the brain. It is connecting your brain with your motor system. It is the most important thing that you have to know. So we are ready. We don't have any problem. You will say you have to teach only anterior spinal cord artery syndrome, only anterior tracts, lateral tracts, posterior tracts, only receptors. There are so many kinds of receptors. Why we have questioning today? We have supporting tissue, white tissue is there, gray matter is inside or outside, because we have covered so many things in one lecture. We have just get together. We have just getting an opportunity after a long time. This question will not be raised if it was a continuation of our lecture, which was end on the 25th January. At that time, we have given a brief knowledge of brain, cranial nerves. Then we have started a spinal cords. Then after a long time, we are starting these things. I don't have any problem. I don't have any problem in taking 2 lectures, 3 lectures in a week even, to get you properly understand the whole brain and spinal cord. Right now, we are sharing our whole lectures to all our auspicious students, to teachers. Just go through it, go through with the text, and accordingly, just you ask the question, you ask the lectures, whatever you want, you will definitely fulfill it. Anil ji? जी Is it okay? Any question? जी तो और हैं हाँ प्रीति जी हेलो हाँ इसके रिलेटेड नहीं है सर, क्वेश्चन मेरा है कि फ्रोजन शोल्डर के बारे में जेपी अग्रवाल सर से बात करनी थी। It is a separate thing, madam. Frozen shoulder अलग चीज से बात हो जाएगी. Topics related कोई discussion? No. रजनी त्रिपाठी जी हाँ रजनी जी अनम्यूट करके पूछिएगा।
हेलो मैडम। सर, नमस्ते। हाँ मैडम। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि मैंने कई किताबों में ये पढ़ा है कि अगर आपका पोस्चर बैठने में या लेटने में सही नहीं है तो उसका असर जो है वो ब्रेन नर्व में होता है, और उसका रीजन ये होता है कि इसीलिए बहुत सारे जो है मनोरोगी होते जा रहे हैं। ऐसा है सर? मैडम आपको मैंने लॉर्डोसिस पढ़ाया ना, आपने देखा होगा स्पाइनल जी। कॉर्ड की पूरी डायग्राम देख के हम लोगों ने सर्टेन लॉर्डोसिस बोला हाँ। था। यही लॉर्डोसिस है जो समाप्त हो जाती है। लॉर्डोसिस समाप्त हो जा रही है, बैठने का तरीका ठीक नहीं है। अब तो साइंटिफिकली आप बात करिए लेक्चर के बाद। आफ्टर लेक्चर वी शुड टॉक द साइंटिफिक मैनर। तो जो लॉर्डोसिस अगर खत्म हो गई है, जी। अगर लॉर्डोसिस को पोस्चर बोलते हैं, हाँ। और नेचुरली अगर नॉर्मल लॉर्डोसिस खत्म हो गई तो नर्व पे प्रेशर पड़ता है। नर्व पे प्रेशर पड़ता है तो सारे सिम्टम्स आते हैं। पेन होता है, पेन का फिर आदमी ठीक नहीं होता है, उसी में अपनी रूटीन एक्टिविटी करता है, फिर इसको कुछ साइकेट्रिक सिम्टम हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने सर। ये बड़ा टॉपिक था मैडम, तो थोड़ा मैं चाहूंगा सबसे कि हम लोग इसको शेयर करेंगे। अनिल जी, आप सब लोग एक एक स्लाइड को खूब इम्पोर्टेंट से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। यस यस बस सबसे यस अच्छी बात है, उसके बाद दोबारा का ये लेक्चर पढ़ने में और मजा आएगा। यस यस, ओके ओके सर। सर अभी फर्दर कोई क्वेरी नहीं है अभी। ठीक है फिर, थैंक यू अनिल जी फॉर गिवन मी an opportunity to deliver our second session of lecture on. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद केतन सर, क्योंकि हम लोग पिछले 25 ईयर्स से स्पाइन के बारे में धीरे धीरे, लेकिन ये आपका सुपर स्पेशलाइजेशन जो है, हमारी उत्सुकता ये है कि हम कितना आपसे एक्सपेक्ट करके इसे यूज कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आगे हम लोगों को इसी प्रकार से आपका ये ज्ञान दर्शन मिलता रहेगा, और हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक सर, थैंक यू। अनिल जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर प्रकाश केतान सर, आपके इस लेक्चर के लिए। और निश्चित रूप से सभी थेरेपिस्ट को आपका लेक्चर ये उपयोगी होगा उनकी प्रैक्टिस में। थैंक यू सर। अब हम आगे के लेक्चर के लिए आमंत्रित करते हैं इसका अप्लाइड पार्ट जो रिसर्च बेस्ड है, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल। थैंक यू अनिल सिंह जी। ये डॉक्टर खेतान सर के अथक प्रयासों से पुनः एक बार हम प्रारंभ कर सके हैं, और निश्चित रूप से इंट्रैक्शन के लिए जो हमारे थेरेपिस्ट पिछले 20-25 वर्षों से अपने अनुभव को शेयर करते रहे हैं, और ट्रीटमेंट में भी। तो आज मैं आपको YNM यौगिक मेरिडियंस की जो किस प्रकार से हमारे हाथ में और पैर में, जिनको हमने नए मेरिडियंस की संज्ञा दी है, इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करना चाहेंगे, और उनके केस हिस्ट्री के माध्यम से, और फिर आपको कुछ समय के पश्चात आपके क्वेश्चंस, जैसे अभी कोई फ्रोजन शोल्डर के बारे में पूछा गया, इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इन सारी चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए, आपने जो है पिछले 25 वर्षों में जो कुछ बाद में भी जुड़े हैं, उन्होंने भी TCM और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, यौगिक और डॉक्टर वॉल, और साथ ही साथ फिजियोलॉजी एनाटॉमी का ये अलग अलग सेमेस्टर्स में ऑनलाइन ऑफलाइन में आपने काफी इसका अध्ययन किया है। मित्रों, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, एक उदाहरण के लिए यूबी के मेरिडियन में
टीसीएम में 67 पॉइंट्स हैं और उसके बाद फर्दर 21 पॉइंट्स डॉक्टर वॉल ने जोड़े। टोटल मिला के 88 पॉइंट्स हैं। जो आपकी नई यौगिक मेरिडियन है उसमें उस 88 पॉइंट्स की जगह केवल 3 पॉइंट है, 0, 1, 2। अब मित्रों, अगर आप ये देखेंगे कि सैकड़ों ऐसे more than hundreds of the indications are there which are related to disease process। आप जानते हैं कि यूबी और किडनी एक इन और यांग मेरिडियंस का जो है पेयर है और उसका फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंगल से कितना महत्व है, क्या नहीं है, ये भी आपने देखा है। और उसको डॉक्टर वॉल ने बिल्कुल हूबहू फिजियोलॉजी एनाटॉमी से एसोसिएट करके, कोरिलेट करके हमें बहुत बड़ी चीज दी है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि यूबी में एक उदाहरण के रूप में 88 पॉइंट्स हैं और 88 पॉइंट्स के कम से कम मोर देन 200 इंडिकेशंस हैं यूबी के मेरिडियन का। आप जानते हैं कि टीसीएम के एंगल से आपकी स्पाइन, अभी लोगों ने बहुत से प्रश्न किए, ये सही है कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब जो हमें बता रहे हैं वो निश्चित रूप से डॉक्टर वॉल के प्रतिरूप है। हमें लेकिन होलिस्टिक व्यू से टीसीएम को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो सारा बेसिस वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन टीसीएम बिना डॉक्टर वॉल के, बिना डॉक्टर खेतान के अधूरा है। ये बात नोमेनक्लेचर का डिफरेंस है कि यूबी मेरिडियन के इनर कैंसस ऑफ द आई दैट स्टार्ट्स एज UB1, फिर उसके ब्रेक पॉइंट्स हैं, यानी ब्रेक पॉइंट का मतलब UB1 और 2 के बीच में, और इसी तरह UB10 और 11 के बीच में अनेक पॉइंट्स, नए पॉइंट्स डेवलप किए हैं डॉक्टर वॉल ने। मेरा कहने का मतलब यह है कि आंख की प्रॉब्लम है और आज के समय में ये YNM में एक बहुत बड़ा करिश्मेटिक आपको चेंज दिखेगा कि हमारी आंख में इनर कैंसस में UB1 है और आउटर कैंसस में GB1, गॉल ब्लैडर 1 का पॉइंट है, और आई के ऑर्बिट पे लोअर पार्ट में ST1 है, स्टमक 1। अब ये 3 पॉइंट जो हैं हमारी सारी कहानी कहते हैं, डिस्पाइट दैट कि यूबी मेरिडियन में 88 पॉइंट्स हैं, मोर देन 55 पॉइंट्स ST मेरिडियन में, और इसी तरीके से गॉल ब्लैडर के मेरिडियन में भी बहुत से पॉइंट्स, क्योंकि डॉक्टर वॉल और टीसीएम के 44 प्लस ब्रेक पॉइंट्स को मिला के अराउंड मोर देन 55 पॉइंट्स। तो मित्रों, अगर हम इनको देखें कुल मिला के तो इसमें हमारे तीनों मेरिडियन में, लेफ्ट राइट में ST मेरिडियन में 0, 1, 2, यूबी में 0, 1, 2 और गॉल ब्लैडर में 0, 1। अब आप कहेंगे सैकड़ों बीमारियां 0, 1, 2 से हो जाएगा 3 पॉइंट से, ये आश्चर्य वाली बात है। लेकिन आप जानते हैं कि शास्त्रों में हमारी क्या चीज है, हमारा एनर्जी सिस्टम बिल्कुल सटिल है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, और उसका विस्तार आप किसी भी एक्सटेंट तक कर सकते हैं। अनिल जी, डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? जी बिल्कुल सर। आजकल एक इसे धर्म से ना जोड़ें, हनुमान चालीसा में सूक्ष्म रूप धरी सिंही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एनर्जी सेटल है वो जितना चाहे पूरे वैश्विक एनर्जी को सिकोड़कर एक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते, और जब उन्हें अपना विकराल रूप धारण कराना है तो पूरे विश्व का
पूरा विश्व को संज्ञेय बना सकता है। क्या चीज? वही एक पॉइंट एनर्जी का विस्तार इतना हो सकता है कि ऊपर से नीचे तक, लेफ्ट से राइट तक, पूरे विश्व में, ग्लोब में एक पॉइंट परम शक्ति परमात्मा की, उसका नाम कुछ भी हो, गॉड, अल्लाह या ईश्वर, लेकिन वो है तो एनर्जी। अच्छा, विजिबिलिटी, यू वांट टू सी मी? ओके ओके फाइन। तो मित्रों, ये बात आप इसको YNM, ये जो नई मेरिडियन है उसका नाम रखा गया है यम नियम, यौगिक मेरिडियंस। यम और नियम का मतलब क्या है? यम है आपके कंट्रोल डिवाइस और नियम है एक्सिक्यूशन डिवाइस। आप कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर को ले लें, हमारे संविधान को ले लें, तो जो कानून बनाने की एक बॉडी है जो संविधान को तैयार करती है, और दूसरी बॉडी है संविधान को क्रियान्वयन देती है। हमारे संस्थान में भी अपेक्स कमेटी पूरे बाइलॉज को फॉर्मुलेट करती है, और एक वर्क्स एग्जीक्यूशन कमेटी जिसमें पेरिफेरल अनिल जी भी हैं, कर्नल पेंडसे सर भी हैं, और आप रमोला जी हैं, अर्चना जी हैं, रविंद्र सर हैं, और देयर आर सो मेनी डॉक्टर, तमाम ऐसे हैं, डॉक्टर नैना सिंह हैं, वो सब मिला के हमारे उस संविधान को एस्पस के और तमाम कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसको मिला के एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसी तरीके से ये एक मेरिडियन में 3 पॉइंट एपेक्स पॉइंट है, 0 1, और एग्जीक्यूशन उसमें सैकड़ों पॉइंट है, 88 पॉइंट्स एक ही में। तो अब अगर आपको आंख की एक गंभीर बीमारी का उपचार करना है, अभी मैं केस हिस्ट्री के से दिखाऊंगा कि जिसको 20 वर्ष से डायबिटीज है और काफी दिनों से जो है पार्किंसन जैसी बीमारी, यानी 4 लिम्स का जो है हाथ पांव हिल रहा है, और इसके बाद जो है वो मालूम चला कि आंख की रोशनी जा रही है और ऑप्टिशियंस और सर्जरी इसमें संभव नहीं है, ग्लूकोमा और रेटिनोपैथी है और इनक्योरेबल है। साउथ से लेके नॉर्थ तक, यानी चेन्नई से लेके हर जगह उन्होंने दरवाजे खटखटाए वेल्लोर तक, लेकिन इस YNM से 2 दिन के अंदर क्या रिस्पांस हुआ, मैं केस हिस्ट्री के माध्यम से आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। और ये आपको इस बात का द्योतक और प्रमाण है, यद्यपि सुपर स्पेशलिस्ट कोई भी हो इसे स्वीकार नहीं कर सकते कि यूवी की मेरिडियन ब्रेन को नरिश करती है। स्टमक का कुछ पार्ट है, स्टमक मेरिडियन ट्राइपोडिक है, उसका नेचर ह्यूमरल भी है, यानी इंडोक्राइन फंक्शन भी डिस्चार्ज करता है, और डाइजेशन के लिए तो सुपर मोस्ट बहुत ही, और तीसरा जो है उसका न्यूरल पोजीशन भी। अब अगर डॉक्टर खेतान सर मेरी बात सुन रहे हो, तो अगर चाइनीज को इंटीग्रेट करें, यूबी मेरिडियन को इंटीग्रेट करें, तो स्पाइन के उनकी सुपर स्पेशलाइजेशन में इतने 4 चांद लग जाएंगे। और हमारे साथियों के क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब हैं कि यूरिनरी ब्लैडर और किस तरीके से पैर की मेरिडियन वहां पर जाती है, आंख का उपचार स्पाइनल नर्व के माध्यम से कैसे हो सकता है? और यूबी मेरिडियन और गॉल ब्लैडर तो पूरे ब्रेन को नरिश करता है। नोबडी कैन बिलीव इट। जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो गॉल ब्लैडर को निकालो और फेंको, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाद में भी दिक्कत होती है, पहले भी दिक्कत होती। अगर ये किसी को ये एहसास हो जाए कि पैर को ब्रेन भी जितना कमांड करता है उतना लीवर और गॉल ब्लैडर भी करता है, यूबी और किडनी भी, और अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो पैरों का दर्द कोई रोक नहीं सकता। आज मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जो
ऑनलाइन ट्रीटमेंट में देखते हैं अलीगढ़ के अरुण राणा जी को, तो उनको दाएं पैर में दर्द, उनका गॉल ब्लैडर निकाला हुआ है, उनको थोड़ा सा नर्वसनेस, टेंशन, एंजाइटी, क्योंकि बहुत बड़ा व्यवसाय है, कोविड के समय में जोल्ट्स, धक्के लगे हैं, और निश्चित रूप से और बीपी और शुगर भी। लेकिन यकीन आपको नहीं होगा कि उनको किसी भी पैथी में विश्वास नहीं है, सिर्फ एक्यूथेरेपी। हमारी ऑनलाइन टीम परेशान हो जाती है कि डेली वो जुड़ते हैं, और आज उन्होंने बताया कि साहब हमारे पैर का जो, हाथ का जो दाएं पैर का दर्द है, वो 85 प्रोटोकॉल कोई भी काम नहीं आया, मेडिसिन काम नहीं आई, कुछ भी नहीं है, और हॉट एंड कोल्ड के पॉइंट से रिलीफ मिल गया। दैट इज बेटर ऑप्शन। उन्होंने कहा ये कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गर्मी के मौसम में सारे संयम टूट जाते हैं। जो लोग ठंडा पानी नहीं पीते, उन्हें मजबूरी में आइसक्रीम और ठंडे बहुत सी चीजें खानी पड़ी, और हॉट एंड कोल्ड, क्योंकि गर्म पानी पीते हैं, बहुत से परहेज किए दुनिया भर के, और ठंडी चीजें छूते नहीं, उसके बाद भी कुछ ऐसी कंडीशंस हुई, गर्मी से आए, और नहीं तो कम से कम एसी से निकले, धूप में गए, धूप से निकले फिर एसी में आए, हॉट एंड कोल्ड। डीप इनसाइड जो है आपके टिश्यू अफेक्टेड, और उसमें नर्व का बहुत बड़ा रोल है, और हमारी मेरिडियंस का बहुत बड़ा रोल है। आज अफसोस की ये बात है कि हमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सुपर स्पेशलिस्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, और हमारे प्रयास जो है निरंतर जारी रहेंगे। लेकिन उन्हें अगर टीसीएम या डॉक्टर वॉल को ही पढ़ लें, यौगिक मेरिडियंस को पढ़ लें, और आयुर्वेद को पढ़ लें, तो उस ट्राइपॉडिक कंसेप्ट से बहुत बड़ी चीज हो सकती है। क्योंकि उन्हें भी एक चीज के स्पेशलिस्ट होने के लिए के बावजूद अपने परिवार के सदस्यों का इलाज अनेक स्थानों पर कराना पड़ता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें सारे जितने भी ब्रांचेज हैं उसका इलाज एक ही जगह करना है। ये एक तरीके से होलिस्टिक है, लेकिन हमारे लिए मेहनत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इस सीमा तक करना पड़ेगा कि हम कोई भी बीमारी हो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, और उसे हमें देखना ही पड़ेगा, और इस सीमा तक देखना पड़ेगा कि जब भी, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि हमें रेटिनोपैथी के लिए वाईएनएम मेरिडियन में 3 पॉइंट चुनने हैं, एक यूवी मेरिडियन का, और जीबी मेरिडियन का, और एसटी। और आपको मालूम है कि इन तीनों मेरिडियन में केवल 9 पॉइंट हैं, 012। अब आप बताइए, शरीर को 3 भागों में बांट दीजिए, ऊपर का हिस्सा 0, और गर्दन से नीचे जो है नीचे का हिस्सा 1 नंबर, और पेल्विस से नीचे का हिस्सा 2 नंबर। क्लियर है? तो आंख का इलाज अनिल जी, जीबी मेरिडियन और यूबी और एसटी मेरिडियन की केवल 0-3 पॉइंट से हम लोग आंख के गंभीर रोगों का इलाज कर सकते हैं कि नहीं? जी, छोटे से लेके बड़े, क्योंकि आप पिछले काफी अरसे से शुरू से रिसर्च टीम के प्रमुख महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और पिछले 6 माह में ऐसे ऐसे उपचार के कम से कम बिंदु में गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज हुआ। लेकिन इसमें 2 बात याद रखें, हमें एसटी 0 चुनना है, और चुनना है जीबी गॉल ब्लैडर का 0 नंबर, और साथ ही चुनना है यूवी का 0 नंबर, 3। लेकिन किसको टोन करेंगे, किसको सेडेट करेंगे, ये हमने ऑनलाइन पे जितने पेशेंट देखे हैं उनके हिसाब से एक फॉर्मुलेशन किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे
जो इंटर्नशिप है या ऑफलाइन हम देखते हैं, तो इन तीनों पॉइंट को जब हम सेंसिटिविटी निकालते हैं तो कभी कभी अलग मिलता है, क्योंकि आंख के रोग केवल रेटिनोपैथी ही नहीं, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। और खास तौर से लोग ये जानते भाई मायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, या और तमाम जो है बहंगापन है, बहुत सी ऐसी बीमारियां, लेकिन तीन ही पॉइंट, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसकी लोकेशन और उसकी सेंसिटिविटी, उसका कॉम्बिनेशन, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट, केवल इतना करता है। अब किसी को विश्वास नहीं हो सकता कि रेटिनोपैथी जैसी गंभीर बीमारी का इलाज केवल 3 बिंदुओं से हो, ये क्या संभव? मित्रों, निश्चित रूप से संभव है। जो हुआ है आपके सामने वो हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है, और आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करके एक केस हिस्ट्री दिखाना चाह रहा हूँ। बियर विद मी, इसमें थोड़ा सा 1 आध मिनट का समय लगेगा। हेलो, 1 मिनट बस। जी।
Am I audible? हाँ जी, you are audible sir and visible also. हाँ, इसकी पूरा करती है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है सर। अच्छा, पूरे ये तक, हाँ पूरा बड़ा कर, बड़ा हो गया, बस ठीक। हाँ देखिए, हेलो जी, ये झारखंड धनबाद से अभी लेटेस्ट ऑफलाइन पेशेंट आए थे 5 मई 2022। इनको डायबिटीज 20 साल से थी, 12 साल से रेटिनोपैथी और पार्किंसन दोनों हाथ में। आप जानते हैं पार्किंसन डिजीज जो है ब्रेन केमिकल से रिलेटेड है। और यूरिनेशन अनकंट्रोल्ड, हाई बीपी 20 साल से और 1 साल से ब्रेथलेसनेस, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक 5 साल से, टीथ डिके 4 इयर्स, ग्रोइन एरिया पेनफुल राइट साइड में, चोट लग जाने के कारण, ये 7 तारीख को बताया, बेड से गिर जाने के कारण हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो मित्रों आप देखिए कि इनको पहला डायबिटीज, दूसरा रेटिनोपैथी 12 साल से। 5 तारीख को इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 7 तारीख को इनको जो दिखने में है चेहरा साफ 10% चेंज आया। और पार्किंसन जैसी डिजीज में 2 दिन में 15% का रिस्पांस। अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन मित्रों, that is also related with the head and the brain. High BP, breathlessness, ये सारी की सारी चीजें। आप जानते हैं कि पीएन यानी पीएन यौगिक मेरिडियन का 3.5 नंबर 1 है, एसपी 3.15 जो है ये भी 1 नंबर है। और इनको BM2 से ट्रीट किया गया। जेडी मेरिडियन को टोन किया गया, गैस्ट्रो को सिडेट और स्किन फाइबर को 2 नंबर को सिडेट किया गया। लीवर 012 टोन किया गया। ये सारा लेफ्ट राइट BM2 से। और हार्ट, CI, AD इन सब का 1 नंबर। 012 इनका जो अब उसका रीनेमिंग कर दिया गया है, जो 8.5 है H का, दैट इज 1। CI 8.5 1 नंबर है, AD 3.5 1 नंबर है। ये सारे के सारे टोन किए गए। और आप देखें कि इसके बाद ये आप जान रहे होंगे कि 0.5 डैश और 1 डैश और ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। और देखिए रेटिनोपैथी के लिए GB 0 को सिडेट, UB को टोन किया गया और स्टमक को 0 को सिडेट। इसका क्या मतलब हुआ कि केवल 3 पॉइंट रेटिनोपैथी के लिए दिए गए। GB का 0 सिडेट और स्टमक का 0 सिडेट यानी अपर पार्ट जो कि आंख को कवर करता है। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा प्रभावशाली कोई चीज हो सकती है, लेकिन ये केवल एक केस है। और यहाँ पर इस समय 20 केस पे इस पे स्टडी हो चुकी है और रिस्पांस बहुत साफ है। प्रभात वर्मा जी ने इसको इस केस हिस्ट्री के YouTube में दिया है। प्रभात जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप? हेलो प्रभात जी, अगर जुड़े हों। जी जुड़े हुए हैं सर। प्रभात जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रभात जी अनम्यूट करके अगर ये आप वीडियो, क्योंकि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं पूरे देश में, उनके लिए बहुत बड़ी नजीर है कि पार्किंसन जैसी डिजीज और रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी को ये इतने कम पॉइंट से, केवल 3 पॉइंट हैं। GB 0 सिडेट, स्टमक 0 सिडेट और UB 0 टोन। ये सारे मेरिडियन के 3 पॉइंट में किया गया है। मैंने पहले भी दोहराया था। प्रभात जी आप
यस जो सर, जी सर, YouTube प्रणाम में सर। रिकॉर्डिंग हुई है वो सुनाना चाहेंगे क्या? सर अभी सर अभी शेयरिंग नहीं हो पाएगी सर, थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इस संबंध में कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन, इस केस हिस्ट्री में बहुत सी चीजें छुपी हैं और गंभीर बातें हैं। हाँ बोलिए मीतू गुप्ता जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। सर मुझे पूछना है, अगर हम इन्फ्लुएंस निकालेंगे, एक साइड हमने यूबी की इन्फ्लुएंस निकाली, वो सीडिएट आई है, तो दूसरी साइड हमारे को निकालनी है या दूसरी साइड सीडिएट ही करना है सर यूबी को? नहीं, एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर दोनों आंखों में प्रॉब्लम है तो बेहतर है कि इन्फ्लुएंस निकालना चाहिए। अब एक बात और मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि टार्सल बोन या कार्पल बोन में जो 0 पॉइंट है, जैसे एनडी और सीआई मेरिडियन, दोनों का 0 पॉइंट जाके एक जगह मिल जाता है। तो जब आप सेंसिटिविटी निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा कि दोनों को उस मीटिंग पॉइंट से नीचे निकालना होगा। यानी कार्पल और टार्सल बोन को 3 भागों में बांटिए। 2 नंबर में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 और 2 में ये ध्यान रखना है कि दोनों पॉइंट एक जगह ना हो, उनको सेपरेट करके देखा जाए, अन्यथा ये एक बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। आपको सेंसिटिविटी में केयरफुल रहना है, लोकेशन में केयरफुल रहना है, और टच पेन आपको ढूंढना है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर एक आंख में कोई प्रॉब्लम है तो केवल एक तरफ दीजिए ट्रीटमेंट, अन्यथा दोनों तरफ सेंसिटिविटी चेक कीजिए, लगभग एक जैसी आएगी, ये हमारा अनुभव कहता है। लेकिन एनर्जी इज सुप्रीम, सेंसिटिविटी इज सुप्रीम। इसलिए हमारे जितने भी ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम में सबसे ज्यादा हमारा महत्व सेंसिटिविटी और जस्ट टू फाइंड आउट द लोकेशन। और लोकेशन ये नहीं कि हमने देख लिया, लेकिन उसमें टच पेन होना चाहिए। सेंसिटिविटी आपकी ऐसी हो कि छुएं और दर्द पेशेंट कर रहा हो। ये नहीं कि कस के आपने किसी चीज से दबा दिया, नहीं, नॉट दैट। मीतू जी, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ये केस हिस्ट्री ऐसी है जो कि अनेक गंभीर रोगों का समवाय है और मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम है। देखिए, लेफ्ट मिडिल फिंगर 5th स्पाइरल जो है अपोजिट फ्लो, ये क्लियर है कि हम लोग एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल डायबिटीज का दे रहे हैं, और डायबिटीज के प्रोटोकॉल में PN1, SP1 और किडनी 1, इन तीनों को भी टोन करने का प्रोसीजर है। और जेडी मेरिडियन का 1 नंबर आपके टिश्यूज की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। कहने का मतलब वाइटल्स के लिए दिया जा रहा है, खासतौर से विटामिन डी के लिए और कैल्शियम के लिए। गैस्ट्रोचक्रा जो है वो कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको गैस की प्रॉब्लम 99% लोगों को है, इसलिए इसका गैस्ट्रोचक्रा का सॉल्यूशन सामान्य रूप से सभी में देखा गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन? यस। हाँ, प्रणाम सर, नमस्कार, मैं कैलकाटा से सर मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ नहीं, जो आपका शुभ नाम, अपना नाम बताएं। अनीता अग्रवाल सर, मैं कैलकाटा से। अच्छा, हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ जो UB0 को टोन किए हैं वो उनका अनकंट्रोल यूरिनेशन के लिए या फिर मतलब मसल्स जो वीक हो गई उसके लिए या आइज के लिए किया गया? हाँ देखिए, ऐसा है, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पहले ही आपसे सबसे निवेदन क्या किया कि अगर 150 बीमारी है तो पॉइंट तो हमारे पास 3 ही है। आप जानते हैं कि जो भी अनकंट्रोल्ड होता है वो ब्रेन से होता है, तो 0।
आपके लिए अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन के लिए भी है, HBP के लिए भी हो सकता है, पार्किंसन के लिए भी हो सकता है और रेटिनोपैथी के लिए भी हो सकता है। अच्छा, ये ऑल इन वन है। और ये जब आप, और पार्किंसन जैसी डिजीज जिसका कि जी ब्रेन केमिकल से सीधा संबंध है जी। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन ब्रेन केमिकल्स और स्टमक ब्रेन ह्यूमरल दोनों को टैकल करता है। जी सर। इसलिए पार्किंसन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जितनी गंभीरता है, मैं ये कहूंगा दांतों के लिए है, तो आप क्या इसे नहीं मानेंगे? मानना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी आपको ये पहचानना है कि जेडी मेरिडियन क्या है। सीआई मेरिडियन वो मेरिडियन नहीं है जो अभी तक हम जानते थे। इसका परिचय हम लोग धीरे धीरे आपको कराएंगे और कंबाइंड तरीके से बिल्कुल कनेक्टिव। इसमें तो हाफ एन आवर का टाइम मिलता है। इसमें हम स्केची एक केस हिस्ट्री के माध्यम से हमने बहुत सी चीजें माइलस्टोन्स आपके सामने रखने के लिए कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन ऑन थैंक यू दिस सर, वेरी केस हिस्ट्री? प्रणाम सर। प्रणाम सर, मैं जयपुर से अनीता। मैं भी एक पेशेंट के बारे में बात करना चाह रही थी। अगर किसी को बीपी, शुगर और सर्वाइकल और कंधे का दर्द, दांतों की प्रॉब्लम है, डबल विजन है, तो हम क्या पॉइंट दे सकते हैं उसको इन यौगिक चक्रा में जो कम से कम पॉइंट में अपना काम हो जाए सर? हाँ, अब बिल्कुल क्लियर है कि जितनी सिर से संबंधित है, देखिए आपके कंधे से ऊपर के नीचे का सर्वाइकल है, सब कुछ है। अब जी हाँ ऐसे सर। आपको स्टडी करनी पड़ेगी सर्वाइकल का टिश्यू कौन कौन से, सर्वाइकल में कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है। अनीता जी आप बताइए। सर्वाइकल में कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है? आज आपने एक बहुत गंभीर बात सुनी होगी, लॉर्डोसिस बनाम स्ट्रेटनिंग। आपने कर्वेचर देखा होगा, जो 20 to 40 डिग्री का कर्वेचर होता है। अगर वो कर्वेचर लॉस हो गया तो गंभीर रोगों का सिलसिला शुरू हो गया और आज 90% केसेस में लॉर्डोसिस है। दैट इज नॉट मेंटेन स्ट्रेटनिंग है, लंबोसेक्टरल और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपनी स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के अंतर को जानते हैं क्या? पहचानते हैं आप स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? नहीं सर, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जानती सर। हाँ, तो सुन लीजिए सभी लोग कि स्पाइनल कॉलम इज मेड ऑफ दैट इज द बोनी स्ट्रक्चर। ठीक, ये बात तो जानते हैं? जी हाँ सर। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका न्यूरो स्ट्रक्चर। और आज जो है प्रकाश केतान साहब ने बताया कि दैट इज नॉट ओनली द न्यूरो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दिस व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, इट इज मेड अप ऑफ, इसमें जो है आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, सर्कुलेशन भी है, तो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जब सर्वाइकल का होगा, लॉर्डोसिस है, तो उसमें क्या होगा, बोन स्ट्रक्चर भी जिसमें ऑस्टियोफाइट्स अफेक्टेड होते हैं। इज इट क्लियर? यस। और C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 ये नर्व। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं। अगर आपको जो है चक्कर आ रहे हैं तो C1, C2 को देना पड़ेगा और सामान्य रूप से स्ट्रेटनिंग के लिए C5, 90%। ये मेरा अनुभव है और ट्रीटमेंट। सर आवाज आ रही है तो क्लियर नहीं है। अगर चक्कर नहीं है तो किसको देना पड़ेगा सर? C5, C6 यानी बोथ है सबके बाद जॉइंट पे 2, 4, 5, 6, 8, 3, 7 टोन।
देखिए इसी जो क्वेश्चन के पीछे हम 1 घंटे इस पे सारी बात करके आपको ये बताना चाहते हैं कि इससे बहुत बड़ी बीमारियां हल हो सकती हैं और आपको जेडी 0 पे टोन करना पड़ेगा, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर ये लॉर्डोसिस हुआ तो आप देखें वाइटल्स की कमी होती है और डेसिकेशन होता है। तो जेडी आपका मालूम है क्या है, इसको पहचानिए क्या चीज है। ये बोन की है, जॉइंट डिजनरेशन है और जॉइंट किसमें होते हैं, बोन में होते हैं। अब पूरी स्पाइनल कॉलम में जॉइंट ही जॉइंट है। मेजर जॉइंट आपका क्या है, एक पूरी सर्वाइकल के C8 तक है, फिर उसके बाद डॉर्सल का D1 से लेके D12 तक, फिर L1 से लेके L5 और फिर S1 से लेके पूरा का पूरा। ये तो क्या होगा, 3 हिस्सों में अगर सर्वाइकल है तो GD 0 टोन, ठीक सर। और एक नीचे आपने देखा होगा BM2 से टोनिफिकेशन 0.5 डैश 1 डैश 1.5 डैश, नहीं सॉरी 5 डैश 5.5 डैश एंड 6 डैश। ये क्या चीज है जानते सर हैं? ये हाँ नहीं सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर मेरे। ये नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं तो सर। आप लोग आगे कैप्सूल कोर्स में करें और इसको बुद्ध की क्लास में हम लोग धीरे धीरे समझाएंगे। आपका जो है ये बताइए, चैप्टर 5 6 डैश जानती हैं, 7 डैश? हेलो? नहीं सर, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है सर अभी। अच्छा अच्छा, तो अपने टीचर से जरूर पूछेगा और जी धीरे हाँ धीरे सर। आप देखिए पीछे नाखून के पीछे थंब में सबसे ऊपर है 9 डैश यंग पार्ट, उससे नीचे है 8 डैश और ऊपर के ज्वाइंट से सबसे ऊपर है 7 डैश और वाक ज्वाइंट से लेके कप ज्वाइंट के बीच में 5 डैश और 6 डैश हैं, उसके 4 टुकड़े कर दिए हम लोगों ने। This is the part of latest research and update. तो 5 डैश 5.5 डैश 6 डैश एंड 6.5 डैश ये सर्वाइकल के लिए और सर्वाइकल और आपके आंख नाक कान के लिए जितनी उससे कनेक्टिविटी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। अब समय का पूरा इसी केस हिस्ट्री के साथ आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। समय का ध्यान रखना होगा, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। थैंक यू सर, प्रणाम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस थोड़े से समय में, आधे घंटे में, ये नया जो रिसर्च वर्क संस्थान का हो रहा है वह सभी पार्टिसिपेंट तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी ध्यानपूर्वक इसको अटेंड करें, जहाँ जरूरत हो लिखें, और आगे की बुधवार की क्लासेज में इसी तरह आदरणीय अग्रवाल सर हम लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे और जो भी रिसर्च वर्क है आप सभी को मिलेगा। और 23 तारीख से दूसरी इंटर्नशिप प्रोग्राम होने जा रहा है। 23 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 7 दिन का इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा, और लास्ट के 2 डेज यानी 30 और 31 को 2 दिन का इसी इस पे टॉपिक पे जो नया रिसर्च है YNF पर आधारित वर्कशॉप होगा। तो उसके लिए मैसेज एक बार सर्कुलेट हो चुका है, अभी फिर से सर्कुलेट होगा, आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 7 दिन की इंटर्नशिप और 2 दिन की वर्कशॉप, दोनों एक साथ कंबाइन इसलिए किया गया है ताकि आपको बार बार न आना पड़े। और ये इंटर्नशिप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। वर्कशॉप जो है नहीं, ये वाला केवल कैप्सूल कोर्स वाला। जी, कैप्सूल कोर्स जो है वो ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। किसी वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो लास्ट 2 डेज का वर्कशॉप होगा वह ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन होगा, और दोनों एक साथ आप पहुंच रहे हैं तो दोनों का एक साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो खाली वर्कशॉप भी। तो आप सभी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को अभी आज की लिंक बंद की जाए।